कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः या तैषुः शिवतमा शिवम् बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवास्तनोरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाचन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशी यामिषम् गिरिशन्तहस्ते विवर्ष्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहिगुंसे पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुम् सुमना असत् अद्य वोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अहेतुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वान् च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्तु मङ्गलः ये चेवागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेडहेमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनम् विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चन्वनस्त्वबुभयो रात्रियोज्याम् यास्यते हस्तैषवः पराता भगवो वपा अवदत्यतनुस्त्वगुम् सहस्राक्षसतेषु दे निशीर्यशल्याढाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विद्यम् धनुर्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उदा अनेषन्नस्येषव आपुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् दृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सत्पिञ्जराय विषेमते पतीनाम् पतये नमो नमो
प्लुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपभीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्दोषाय क्रन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निर्व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः सकुभाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तत्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तम् चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्जानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो दन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्तभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नम स्वपद्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठभ्यो दावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यस्तभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनेभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्तृगुम्भदेभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो घ्रातेभ्यो घ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो दन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतदन्वये च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मीडुष्टमाय चेषुमते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवेदादिराय च नमः शीघ्रियाय च शीभ्याय च नमः
ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय तद्वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्पाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽव्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चापबिन्धते च नमो वर्मिणे च वरूदिने च नमो निर्विणे च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चानन्याय च नमो धृष्णवे च प्रभृशाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमः तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुदन्वने च नमः श्रुत्याय च पद्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽध्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेध्याय च विद्युत्याय च नमः ईघ्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः सेव्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लाभ्याय च नमः चष्प्याय च पेन्याय च नमः श्रिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपद्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्याय च गृह्याय च नमः तल्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्टाय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्म्याय च सूर्म्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आकिदते च प्रकिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आविर्वत्केभ्यः द्रापे अन्धसत्पते दरिद्रम् नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा वेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममद या ते रुद्र शिवा तनो शिवा विश्वाः वेषजे शिवा रुद्रस्य वेषजे तया नो मृणजीवसे इमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रवरामहे मतिम्
यथा नः शमतद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृदिक्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चम् च योश्च मनुरायजे पिता तदस्यामतवरुद्रप्रणीतौ मानो मान्तमुतमानो अर्भकम् मानमुक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानो वदे पितरम् मोत मातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीर्षः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः वीरान् मानो रुद्रभावितो वदे अविश्वन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उत पूरुषग्ने क्षयद्वीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अलिज देव ब्रूयता च नः शर्म यच्चद्विवर्हाः सुविश्रुतम् गद्दतम् युवानम् मृगन्न भीममुपहर्दमुग्रम् मृडा चरिद्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायो अवस्थिरा भगवभ्यस्तनुष्वमेवस्तोकायतनयाय मृडया मेढुस्तमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निदाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहे विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रकुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्या तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवादे नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचरा नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवकुम् रुद्रा उपश्रिता ये वृक्षेषु तस्मिन् जरा नीलग्रीवा विलोहिता ये भूतानामधिपतयो वृषिकासक्तपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विवतो जनान् ये पताम् पतिरक्षय ऐलभृडायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशो देचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु तेयम् द्विष्णो यच्च नोद्वेषितम् भोजम् वेददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्रव्यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु एते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मत्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् ग्रन्थिरसि रुद्रो माविशान्ततः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमस्तु हि यस्विषः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति वेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमो निर्देवमसुरम् ध्रुवस्य अयम् मे हस्तो भगवानयम् मे भगवत्तरः
मे विश्ववेदयो यगुं शिवादिवर्षणः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिद्धिविनायक पाहि गजानन सिद्धिविनायक पाहि गजानन सिद्धिविनायक पाहि गजानन सिद्धिविनायक पाहि गजानन गौरीनन्दन हे जगवन्दन गौरीनन्दन हे जगवन्दन गौरीनन्दन हे जगवन्दन सिद्धिविनायक पाहि गजानन सिद्धिविनायक पाहि गजानन पाशाङ्कुशधर विघ्नविनाशा पाशाङ्कुशधर विघ्नविनाशा पाशाङ्कुशधर विघ्नविनाशा पाशाङ्कुशधर विघ्नविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा सिद्धिविनायक पाहि गजानन सिद्धिविनायक पाहि गजानन गौरीनन्दन हे जगवन्दन गौरीनन्दन हे जगवन्दन सिद्धिविनायक पाहि गजानन सिद्धिविनायक पाहि गजानन पाशाङ्कुशधर विघ्नविनाशा पाशाङ्कुशधर विघ्नविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा बुद्धिप्रदायक पापविनाशा सिद्धिविनायक पाहि गजानन अल्लाह तुम ईश्वर भी तुम महावीर नानक राम। अल्लाह तुम ईश्वर भी तुम महावीर नानक राम। अल्लाह तुम
ईश्वर भी तुम महावीर नानक राम। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। परतीश साई शंकरा तुम ही हो मेरे प्राण। 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 अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। सौराष्ट्र येशु बुद्ध तुम हो सबके पालनहार। 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 सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। ओ सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। ओ सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। परतीश साई शंकरा तुम ही हो मेरे प्राण। परतीश साई शंकरा तुम ही हो मेरे प्राण। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। सौराष्ट्र येशु बुद्ध तुम हो सबके पालनहार। सौराष्ट्र येशु बुद्ध तुम हो सबके पालनहार। सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। ओ सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। ओ सच्चिदानंद साई तेरा वृंदावन शुभ धाम। अल्लाह तुम, ईश्वर भी तुम, महावीर नानक राम। नीलवदनाति सुन्दरा नीलवदनाति नीलवदनाति माधव
अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई, सद्गुरु साई अंतर्यामी, सद्गुरु साई अंतर्यामी, सद्गुरु साई अंतर्यामी, सद्गुरु साई अंतर्यामी, नानक साई प्रेम साई, नानक साई प्रेम साई, नानक साई प्रेम साई, नानक साई प्रेम साई, ईशु साई करुणा सागर, यीशु साई करुणा सागर, ईशु साई करुणा सागर, यीशु साई करुणा सागर, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, अल्लाह साई मौला साई, अल्लाह साई मौला साई, सद्गुरु साई अंतर्यामी, सद्गुरु साई अंतर्यामी, नानक साई प्रेम साई, नानक साई प्रेम साई, ईशु साई करुणा सागर, यीशु साई करुणा सागर, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, सर्वधर्म प्रिय सत्य साई, अल्लाह साई मौला साई। जगन्माते जगजननी, जगन्माते जगजननी, जगन्माते जगजननी, जगन्माते जगजननी, जय जगदम्बे देवी भवानी, जय जगदम्बे देवी भवानी, जय जगदम्बे देवी भवानी, जय जगदम्बे देवी भवानी, जगन्माते जगजननी, जगन्माते जगजननी, देवी सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी, देवी सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी, देवी सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी, देवी सरस्वती
संहारिणी माता महिषासुर संहारिणी माता जगन्माते जगजननी बेड़ा पार करो मेरे साईं, 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 उद्धार करो मेरे बाबा, उद्धार करो मेरे बाबा, उद्धार करो मेरे बाबा, उद्धार करो मेरे बाबा, बेड़ा पार करो मेरे साईं, बेड़ा पार करो मेरे साईं। अल्लाह ईश्वर साईं बाबा, अल्लाह ईश्वर साईं बाबा, अल्लाह ईश्वर साईं बाबा, अल्लाह ईश्वर साईं बाबा, शिरडी बाबा परती बाबा, शिरडी बाबा परती बाबा, शिरडी बाबा परती बाबा, शिरडी बाबा परती बाबा, रहम नजर करो साईं 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 बाबा, दया करो साईं कृपा करो, 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 बेड़ा पार करो मेरे साईं, बेड़ा पार करो मेरे साईं, उद्धार करो मेरे बाबा, उद्धार करो मेरे बाबा, बेड़ा पार करो मेरे साईं, बेड़ा पार करो मेरे साईं, अल्लाह ईश्वर साईं बाबा, अल्लाह ईश्वर साईं बाबा, शिरडी बाबा परती बाबा, शिरडी बाबा परती बाबा, रहम नजर करो साईं बाबा, रहम नजर करो साईं बाबा, दया करो साईं कृपा करो, 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 बेड़ा पार करो मेरे साईं।
जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदोद्धारा जय जय हो, जगदोद्धारा जय जय हो, जगदोद्धारा जय जय हो, जगदोद्धारा जय जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, अल्लाह ईशो नानक साई, अल्लाह ईशो नानक साई, अल्लाह ईशो नानक साई, अल्लाह ईशो नानक साई, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, सौराष्ट्र सर्वधर्म प्रिय देवा, सौराष्ट्र सर्वधर्म प्रिय देवा, सौराष्ट्र सर्वधर्म प्रिय देवा, सौराष्ट्र सर्वधर्म प्रिय देवा, प्रशांति निवासा सत्य साई देवा, प्रशांति निवासा सत्य साई देवा, प्रशांति निवासा सत्य साई देवा, जय हो, 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 जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदोद्धारा जय जय हो, जगदोद्धारा जय जय हो, जगदीश हरे जय हो, जगदीश हरे जय हो, अल्लाह ईशो नानक साई, अल्लाह ईशो नानक साई, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, अंतर्यामी बुद्ध महावीर, सौराष्ट्र सर्वधर्म प्रिय देवा, सर्वधर्म प्रिय देवा, प्रशांति निवासा सत्य साई देवा, प्रशांति निवासा सत्य साई देवा, जय हो, 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 जगदीश हरे जय हो। हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर
गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, भवानी शंकर, भवानी शंकर, हे गिरिजापति भवानी शंकर, गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, हे गिरिजापति भवानी शंकर, भवानी शंकर, भवानी शंकर, हर भवानी शंकर, शिव भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो, 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 हे शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इह्दिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. I offer our most humble pranams at the lotus feet of our dearest Bhagavan, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. Muslims around the world celebrate Ramadan, one of the most important festivals in the Islamic calendar. Today, I would like to share with you some interesting insights about Ramadan. What is Ramadan? Ramadan is taken from the word Ramad, which means that which is intensely heated by the sun, and was named such because it burns the sins of the believers. It is considered a sacred month in Islam because it's when Muslims believe the first verses of the Quran, Islam's holy book, were revealed to the Prophet Muhammad more than 1,400 years ago. During Ramadan, Muslims all over the world fast between the hours of sunrise to sunset. Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar, but the date changes every year. This is because Islam uses the lunar calendar based on the cycles of the moon. So it is not a fixed date in the Western or solar calendar. Why is fasting important? Fasting is one of the 5 pillars of Islam. These are 5 principles which Muslims believe are compulsory acts ordered by God and form the basis of how Muslims live their lives. The other pillars are faith, prayer 5 times a day, charity making, and a pilgrimage to the holy city of Mecca. How does this work in practice? Muslims have an early morning meal before dawn, known as Sahur. They break their fast after sunset for the evening meal, called Iftar. Ramadan is a time when Muslims are encouraged to give to charity, strengthen their relationship with God, and show kindness, gratitude, and patience. Fasting encourages them to feel an affinity with the poor across the world who have little or no food to eat, whilst for their own bodies, scientific studies have shown that fasting provides several health benefits. During this month, believers also head to the mosque for an additional night prayer when lockdown restrictions aren't in place. Some mosques have been holding virtual services online for people to watch together. Does everybody fast? Not everybody fasts during Ramadan. Children, pregnant women, the elderly, and those who are ill or who are traveling do not have to fast. What happens at the end of Ramadan? There is a special festival to mark the end of Ramadan. This is called Eid al-Fitr, the festival of the breaking of the fast. It begins when the first light of the new moon is seen in the sky. Muslims will not only celebrate the end of fasting, but will also thank Allah for the help and strength they were given throughout the previous month. Often children are given presents and new clothes. Let us now hear what Swami says about this festival. Swami says, just as the Vedas, revealed sacred scriptures, were heard and propagated as heard, Shruti, the Quran too was heard by Hazrat Muhammad. The Quran has Salat and Zakat as 2 eyes. Salat means prayer, Zakat means charity. Those who consider charity as a high duty and elevate their consciousness through the prayers and continuous meditation on God are Muslims. Islam is a word which denotes not a particular religion, but a state of mind, the state of total surrender to the will of God. Islam means dedication, surrender, peace, tranquility. Thank you very much for listening. We would like to wish you a very blessed celebration. Eid Mubarak and Jai Sai Ram. Offering our most loving salutations
at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Satya Sai Baba, respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. As Swami has so lovingly reminded us, the month of Ramazan is set apart for the holy task of bringing into memory and practice the teachings that Hazrat Muhammad conveyed and attaining that stage of unity and purity which is truly divine. Brothers and sisters, today we briefly recap on the similarities of some of the teachings of Islam and those of our beloved Bhagwan Baba. The word Islam is an Arabic word derived from the word aslama, and it is widely accepted by most Muslims that Islam is a belief and practice as a means surrendering to the divine will. In essence, it recognizes that the purpose of the life of man is to unite with the ultimate divine being, God, the Absolute. During the Ramadan celebrations in Prashanti Nilayam in 1983, Swami stated that Islam is a word which denotes not a particular religion, but a state of mind, the state of total surrender to the will of God. Islam means dedication, surrender, peace, and tranquility. A Muslim is therefore one who has totally surrendered his entire mind to God, and Islam sets a series of moral, practical, and social codes on how to achieve this. Swami declared that all founders for religions have heard this impersonal voice of God revealing the Atma that activates the entire creation. Just as the Vedas were heard and propagated as heard, the Quran too was heard by Hazrat Muhammad. Hazrat Muhammad himself was an illiterate man, but to those who were close to him, they memorized the recitations and compiled them into the holy book, the Quran. The Quran itself is comprised of 114 chapters and 6,000 verses. Within this holy book, Swami says there are two overriding themes. Firstly, oneness with God, and secondly, surrender. Coming to the first theme, Swami has said Islam directed attention to the one in the many, the unity in diversity, and led people to the reality named God. Similarly, the Quran teaches that God alone is one, but also that to think that there is something apart from Allah is the mark of an unbeliever who joins gods to God. The Hadith further proclaims, "My Lord, you are the first, nothing is before you. You are the last, nothing is after you. You are the outward, nothing is over you. You are the inward, nothing is inside of you. Help me to pay my debt and keep poverty from me." Brothers and sisters, how similar is this to what our beloved Bhagwan has reminded us time and time again? Most important, do not ever think that you and God are separate. Think always, God is with me, He is inside me, He is around me. All there is God. I myself am God. I am the infinite, the eternal. I am not two. I am one, only one. There is no one else besides me. I and God are one and the same. To realize this unity, the first step is to develop self-confidence. It comes when you realize that God is not outside of you. The second theme of the Quran
is one of surrender. Swami has said, Islam means surrender to God. All who in a spirit of surrender and dedication live in peace and harmony in society do, really speaking, belong to Islam. The religion of Islam consists of 5 pillars. The first pillar is that of La ilaha illallah, that God alone is. The second pillar is that of daily prayers, Salah. The third is of fasting, Saum. The fourth is giving of alms, Zakat. And the fifth, Hajj, holy pilgrimage. The 5 pillars of Islam are very much intertwined and connected to the 5 human values that Swami had put so much importance on. Firstly, truth, that God alone is. Secondly, peace, that we achieve from daily prayers, Salah. Thirdly, non-violence through the form of fasting, Saum. Fourthly, right action and dharma through giving alms to those who in need, Zakat. And finally, love through participation in holy pilgrimage to our inner Prashanti Nilayam. Dearest brothers and sisters, let us remind ourselves that Swami has always said, I have come not to disturb or destroy any faith, but to confirm each in his own faith, so that the Christian becomes a better Christian, the Muslim a better Muslim, and the Hindu a better Hindu. Let us therefore pray to him that no matter what religious path we follow, we are always reminded and connected to his divine teachings, which are intertwined in all religions of the world. Jai Sai Ram. కనుక ఈనాడు మనము ఏ విధంగా నడుచుకోవాలనేటువంటిది జీవితంలో చాలా క్రొత్తగా మనము నూతనమైనటువంటి యొక్క చాప్టర్గా తీసుకోవాలి. So we should start a new chapter and learn how to live hereafter. Past is past. జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది. Past is past beyond recovery. తిరిగి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది ముందుకు రాదు. In spite of all efforts you cannot regain it. ఫ్యూచర్ ని యోచన చేయకండి. Future is uncertain. కానీ ఫ్యూచర్ is not sure. Future is not certain. కానీ ప్రెజెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. But present is very important. This is not ordinary present. This is not ordinary present. Omnipresent. This is omnipresent. ఎందువల్ల? Why? ఈనాడు మానవుడు అనేక దుఃఖములకు అశాంతికి గురి కావడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for the misery of mankind today? ప్రెజెంట్ ను మర్చిపోతున్నాడు, పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ను వెతుక్కుంటున్నాడు. He has forgotten the present. He broods over the past and worried of the future. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు మనకు ప్రధానం, కానీ the present is important. ఆకలేసినప్పుడు తట్టలో ఉన్నటువంటి అన్నాన్ని భుజించు. When you are hungry, start eating the food served on the plate. 10 నెలల కిందట మా ఇంట్లో పండగ చేసిండ్రి, ఆ పండుగలో పంచపక్ష పరమాన్నములు ఉన్నాయి, దాన్ని తలుచుకొని ప్రయోజనం ఎందుకు? What is the fun of thinking of a grand feast that you had enjoyed 10 months ago? కనుక 10 దినముల ముందుగా జరిగిపోయినటువంటి నీవు యోచించొద్దు. Don't think of the past. ప్రెజెంట్ ఇది నీవు యోచించు. Think of the present. పాస్ట్ ట్రీ. Past is a tree. Future tree. Future is also a tree. Present is seed. Present is the seed. ఆ పాస్ట్ ట్రీ నుంచి ప్రెజెంట్ సీడ్ వచ్చింది. Out of the past tree you have the present seed. ప్రెజెంట్ సీడ్ నుంచి ఫ్యూచర్ ట్రీ వస్తుంది. Out of the present seed you will have the future tree. Seed is very 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 important. So seed is very very important. ఆ సీడ్ ని ప్రెజెంట్ లో మీరు తగినటువంటి శాంతిని పొందాలి. Therefore you should take care of the present seed and attain peace. ఏ మాత్రము మీరు తలంచకండి. Don't be bothered with the future. Never be worried. ప్రెజెంట్ లో మనం మంచిగా ఉంటే ఫ్యూచర్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు మంచిదే వస్తుంది. If you are good in the present, in future you will be good.
కనుకనే ఫ్యూచర్ ని యోచన చేసుకుంటూ పోవద్దు. So don't be worried of the నా future. ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, నా ఫ్యూచర్ ఏమవుతుందో, ఇది ఒక సైకలాజికల్ గా నిజంగా దుఃఖమే ఏర్పడిపోతుంది. People go on worrying. They are highly agitated. They are bothered of their future, what's going to happen. చింతనే చేయకూడదు. Don't bother about it. ఎందుకు వరీ చేయాలి? Why should you worry? What is the shape of worry? What is the shape of worry? It is mental created fear only. Worry means mentally created fear only. ఈ వరీకి ఏమాత్రము రూపం లేదు. Worry has no form. నీవు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావు. It is only your creation. కాబట్టి అలాంటి ఒక దీనికి మీరు అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Never give scope for such worry. ఈ విధంగా ఉంటుండి ఎప్పుడు చూసినా కూడాను ఆనందంగా ఉంటుండండి. Be happy all the time. మాకు ఎట్ట స్వామి ఇంటిలో అనేక చిక్కులు ఉంటాయి, మాకు అనేక బాధలు ఉంటున్నాయి, సంసారంలో చాలా వ్యతలు ఉంటున్నాయి, మేము ఎట్ట సుఖంగా ఉండడానికి వీలవుతుందంటారు. You may say, Swami, how is it possible to be happy all the time? We have got our own problems, our own worries there. పోనీ వరి చేస్తే మన ప్రాబ్లం పోతుంటాయా? Is worry a solution to a problem? పోవటం లేదే. No. కనుక ఎందుకు వరి చేసి Then ప్రయోజనం why ఏంటి? should you worry? What is the fun of it? హ్యాపీగా ఉండు. Be happy now. ఈ హ్యాపీని నీ వరిని దూరం చేస్తుంది. And this happiness will keep you that worry far off. అంతేగాని వరి చేసుకుంటూ కూర్చుంటే వరి ఇంకా ప్లస్ 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 అవుతుంది. Because this worry will add to your problem more and more. కనుక నీ వరి చేయకూడదు. Never worry. ఏదొచ్చినా కానీ ఇది భగవత్ ప్రసాదం. Take it as God's gift, whatever may happen. ఈ కష్టములు కూడా భగవత్ ప్రసాదమే. Even the difficulties are pleasure God's is an interval between two pains. The pleasure is an interval between two pains. కనుక ఈ రెండు కష్టముల మధ్యలోనే ఒక సుఖం ఉంటుండాలి. And there lies the happiness. In between కష్టములే two pains. లేకపోతే సుఖం యొక్క విలువనే మనకు తెలియదు. Without a pain you cannot know the value of a pleasure. చీకటే లేకపోతే వెలుగు యొక్క ప్రకాశమే మనకు తెలియదు. Without darkness you cannot know the value of కాబట్టి light. కష్టములు కూడా ఒక ప్రసాదమే. Therefore difficulties are also God's gift. మలేరియా జ్వరం వచ్చినటువంటి వారికి The one who suffered from malaria, బిటర్ క్వినైన్ మిక్చర్ ఇస్తారు. they are given quinine mixture. బిటర్ గా ఉంటాది. It's so bitter. కానీ But ఆ బిటర్ నీవు కష్టపడి తాగినప్పుడే ఈ మలేరియా ఫీవర్ నివారణ అయిపోతుంది. when you once you accept and take that medicine, bitter quinine, you will be cured of the malaria. మెడిసిన్ కూడా నువ్వు తీయగా ఉండాలని కోరితే నీ బాధ నీకు నివారణ కాదు. You cannot demand that medicine should be sweet. కనుక కష్టం కూడా మనకు సుఖాన్ని అందిస్తుంది. The difficulty also gives you joy later. కనుక ఎప్పుడు నీవు జాయిగా ఉండాలి. You should be joyful all the time. అప్పుడే నీ యొక్క జీవితము మంచి ఆనందాన్ని ఆదర్శాన్ని అందిస్తుంది. And then your life will be blissful and set an ideal to the rest. యువకులారా, Youngsters, శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయాలు కానీ, either physical matters ఫ్యూచర్ యొక్క విషయాలు కానీ, or the future కుటుంబం situation యొక్క విషయాలు కానీ, or that or the మీరు bygone, ఏమాత్రం కూడా నువ్వు హృదయంలో చోటు ఇవ్వకండి. don't entertain them in your heart. హృదయంలో చోటు ఇవ్వవలసింది ఒక్కదానికే, భగవంతునికి మాత్రమే ఇవ్వాలి. You should give place to God only in your heart, none మిగిలినవన్నీ else. కూడా బయట ఆర్ట్స్ అంతా. Outside you have the art. ఆర్ట్ అంతా అవుట్ సైడ్ ఉంది, Art is outside. హార్ట్ అంతా ఇన్సైడ్ ఉంది. Heart is inside. కాబట్టి ఆర్ట్ అంతా హార్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటివే. So all the art outside has come out of the heart inside. కనుక మొట్టమొదటి నీవు ఆర్ట్ చూసుకో. So think of the heart first. ఆర్ట్ చూడద్దు. Don't follow the art. ఆ ఆర్ట్ లోపల నీవు మంచి ఆనందాన్ని పొందుతుంటే ఆర్ట్ కూడా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. When once you think of this heart, even the art outside will make you joyful. రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్. Everything is the reflection of the inner being. లోపల నీవు ఆనందంగా ఉంటే బయట కూడా ఆనందమే వస్తుంది. If you are happy within, you will be happy in the exterior. ఎందుకోసం? భగవంతుడు నా వెంటనే ఉన్నాడు, Because God is with నా me. హృదయం నందే He is ఉంటున్నాడు in my heart. అనేటువంటి విశ్వాసాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should strengthen such sort of faith. అప్పుడే మనకు తగినటువంటి యొక్క ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలు మనకు అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Then we'll have all the kind of zeal and enthusiasm. Om Shri Sai Ram. Starting this week, for the next few weeks, we will include special prayers for the health and well-being of our brothers and sisters around the world. We will first have Swami chanting the Gayatri Mantra, and then we will have the Mrityunjaya Mantra. Please join in the chanting if you can. Sai Ram. భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం భూర్భువస్సువః
भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। Om Shri Sai Ram. We will shortly start the meditation. Please sit comfortably with back straight and sufficient space around you. The chanting of the Sai Gayatri will be played in the background. Please do not chant along with it, as this is a session for silent meditation. Let us focus our mind on Swami and set aside all other thoughts. At the end of the meditation, there will be a 1-minute silence. Now we will start the meditation. Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. 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 Om Saishwaraya Vidmahe Satyadevaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat.
ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। Om
Sai Centre hopes you've enjoyed today's offerings of bhajans. The thoughts for the week. The devotee is the needle, which is always drawn towards the magnet of God. But the needle should be near and clean enough. If you feel you haven't yet received His grace, it is because the needle is not pure enough. You haven't scraped off, by the process of repentance, the mud, dust and rust called attachment. And by near, I do not mean physically near. I do not measure distance between you and me in miles or meters. You may be physically very far, but mentally by my side. I am always with you, in you, beside you ever. Only you have to be aware of me and make use of my presence. Develop virtues, good habits and attitudes, and a noble character. With love in your heart, repeat God's name, and adopt spiritual practices. Then grace will start flowing onto you. Baba Jai Sai Ram. I offer my most humble pranams at the lotus feet of our beloved Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. Respected elders, brothers and sisters, Jai Sai Ram. These are the announcements for Sunday, the 16th of May. Mill Hill Sai Centre meeting. Please keep yourselves free for the next quarterly meeting of Mill Hill Sai Centre on Sunday, the 23rd of May at 6 p.m. This is an opportunity for us to update all on the activities in the past quarter and the coming quarter. It is also an opportunity for us to see one another during these times of restrictions. Feedback. If you have any comments, feedback or suggestions regarding the programs being organized by Mill Hill Sai Centre or anything else we can do as a centre, please do share your thoughts with our centre chair on millhill.centrechair@gmail.com or 07722 197 830. This concludes our morning's program. We wish you all a happy, holy and healthy week ahead. Jai Sai Ram.